So hello my friends, today we're going to see some objective questions on agriculture science and technology. So here we go. So agricultural motivation in 2024 aims to significantly reduce water consumption in crop production in smart irrigation system that uses AI. So AI-driven smart irrigation system use data to optimize water use based on soil moisture, weather condition, and plant needs. This helps in significantly reduce the waste, especially in the region facing water scarcity. What is the purpose of CRISPR technology in agriculture in 2024? So इसका all of the above होगा to create new plant variety with higher yield, to develop crop resistance to environmental stress, to enhance the nutritional value of the crop. So CRISPR में SPR जीन एडिटिंग, ये क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू क्रिएट प्लांट with desirable traits like higher yield, environmental stress resistance, and improved nutritional content. So which genetically modified crop introduced in 2024 engineered for enhanced resistance to heat stress? So इसका आंसर है heat tolerated maize. In response to the rising global temperature, the heat tolerant maize variety have been developed to withstand extreme heat condition, ensuring the stable yield in increasingly hot climate. So what are the major agriculture technology in development in 2024 is aimed at enhancing the food production while reducing the environmental impact? So इसका आंसर है precision agriculture with sensor. So precision agriculture uses sensor to monitor crop health, the water usage, soil condition. This data driven approach helps to optimize input water and fertilizer, and minimizing the waste, reducing environmental impact. Which farming method in 2024 focus on the growing crops without soil and is gaining popularity for urban agriculture? तो इसका आंसर है hydroponics involves growing plant in nutrient rich water rather than soil. इसमें soil में नहीं, nutrient rich water में हम लोग crop को grow करते हैं. This method is gaining popularity in urban areas due to the efficiency in water use and the unavailability and ability to grow crops in limited space. कम जगह भी लेता है और वाटर भी कम यूज करता है. सो विच 2024 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है एम्स टू कॉम्बैट सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव वाटर रिटेंशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग? सो इसका आंसर है कवर क्रॉपिंग. सो कवर क्रॉपिंग वेयर द क्रॉप्स लाइक legumes are planted between the main crops helps prevent soil erosion and improve water retention, especially in arid region. Which biotechnology tool are being used in 2024 to create crops more resilient in climate change? So I think Cypress gene editing. So yes, it is correct. CRISPR gene editing, it allows the precise modification to crop DNA to introduce traits like drought resistance, heat tolerance, and improved nutritional content, making crop more resilient to climate change. Which food security initiative in 2024 focus on reducing the food waste by improving the storage and distribution system? So इसका आंसर है B, circular food system. Circular food system aims to reduce the food waste by optimizing storage, transportation, and recycling the food byproduct, thus improving the overall food security network. In 2024, the new GM crop variety was developed to improve the nutritional content for population in developing countries.
इसका example, golden rice. Golden has been modified as a biofortified with vitamin A, addressing deficiency in developing in country where rich where rice is a staple food, improving the health of millions of the people. In recent agriculture trend 2024 focus on diversifying the farm operation to enhance resilience and sustainability. इसका आंसर है बी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? कॉम्बाइन करता है क्रॉप कल्टीवेशन, लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड एक्वाकल्चर and agroforestry to enhance the productivity, increase farm resilience and improve sustainability. Which agriculture technology helps farmer monitor soil moisture level and predict the optimal harvest times. So इसका आंसर है बी, soil moisture sensor. Soil moisture sensor provide real-time data on the water content of the soil, allowing farmer to make informed decision about irrigation and harvest timing. So what is the focus of smart farming initiative in 2024? So इसका आंसर है बी, automatic farming practicing through the robotics. So इसका smart farming includes using robotics, drones and IoT devices to automatically tasks such planting, monitoring crop health and harvesting, leading to the more efficient and sustainable farming. Which agricultural practice gaining momentum in 2024 to aim at improving biodiversity while providing income to the farmer? So agroforestry integrate trees with crops or livestock. It enhance biodiversity, improve soil quality and provide additional income through timber, fruits and other tree based product. So in 2024 what agricultural breakthrough was made to improve the food production in region and with the extreme heat? So इसका आंसर है A, heat resistant GM crops. So new genetically modified crops that are heat resistant have been developed to cope with extreme heat in region prone to the high temperature, ensuring the stable food production. What agricultural technique has been is being promoted in 2024 in regenerating soil health and increase carbon sequencing? तो इसका आंसर है सी, regenerative agriculture focus on the improving soil health through practice like no-till farming, crop rotation and crop cover cropping. It not only enhance the soil quality but also capture carbon from the atmosphere, mitigating climate change. In 2024 agriculture terminology aims to reduce greenhouse gas emission from the livestock farming. इसका lab grown meat are also known as the cultivated meat sustainable alternative to traditional livestock farming, reduce the methane emission and environmental footprint associated with conventional animal farming. So which of the following is India's first genetically modified GM crop? So it is A, BT cotton. BT cotton is India's first genetically modified crop. Which India state launched the Farmers Welfare Fund to provide financial assistance to farmer in 2023? तो इसका आंसर केरला. Kerala launched the Farmers Welfare Fund in 2023 provide financial assistance to farmer, especially during times of crop failure of economic hardship. So which country is recently introduced the design for automated farming in 2024? Sorry, I'm not robot design for automated farming. So I think it is B, United States. In 2024 United States introduced the robot designed to automate several farming tasks like planting, watering, weeding. The robot is part of an effort to reduce the labor cost and improve the farming efficiency, especially in large scale agriculture operation in India. Indian state launched the Integrated Agricultural Development Scheme IDES in 2024 promote the organic farming. इसका आंसर है D, Kerala.
The Kerala has launched the integrated agriculture farming scheme, agriculture development scheme. It aims to promote organic farming practice across the state. In 2024, which Indian state became the first to adopt AI and blockchain technology for crop insurance claiming? So its answer is C, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh became the first state in India to adopt AI and blockchain technology to streamline crop insurance claim. By leveraging AI, the state aims to quickly access crop damage using satellite imagery and sensor. Which of the following was the first state to launch the agri-tech incubator to support startups in the agriculture technology sector in 2024? To see Telangana. Telangana became the first state to launch the agri-tech incubator to support startups in the agriculture technology sector. The incubator provide financial assistance, technical guidance, and platform for innovation in areas such as precision farming, soil health management, and agriculture supply chain solutions. So which of the following is the latest initiative launched in 2024 to promote sustainable agriculture and reduce carbon emission in India? So इसका आंसर C, zero carbon agriculture scheme. Zero carbon agriculture scheme launched in 2024 is India's latest initiative aims to promote sustainable agriculture practice while reducing carbon emission. Which of the following artificial intelligence AI application is being used in India since 2024 to optimize the use of pesticides and fertilizer? So इसका आंसर है AI powered drone spraying system. AI powered drone spraying system has been increasingly used in India since 2024 to optimize the application of pesticide and fertilizer. So which of the following is the main role of genetically modified crop in agriculture? So इसका आंसर A, increase the crop yield. Genetically modified GM crops are designed to have a higher resistance to pest, disease, and environmental stress, leading to the increased crop yields and improve food security. Which of the following technology helps farmer to monitor soil moisture level? So इसका आंसर C, soil sensor. Soil sensor helps farmer to monitor the moisture level in the soil, allowing for more efficient irrigation and water usage. This is very crucial for conserving water resource. Which of the following is a key benefit of drip irrigation in agriculture? So इसका आंसर A, reduce water waste. Drip irrigation delivers the water directly to the root of the plant, reducing the water waste by preventing evaporation and runoff. The technique is highly efficient, especially in areas with limited water resource. So the role what role does the drone play in modern agriculture? मॉडर्न एग्रीकल्चर में ड्रोन का क्या रोल है? तो ये रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ एंड अप्लाई पेस्टिसाइड क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करने में और पेस्टिसाइड को अप्लाई करने में इसका रोल है. सो विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द क्रॉप यील्ड एंड वेदर कंडीशन? सो इसका आंसर है ए, वेदर सैटेलाइट्स प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल डाटा ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हेल्पिंग फार्मर प्रिडिक्टिंग वेदर pattern, potential crop yield, and natural disaster, thus aiding in better planning and decision making. What is the role of biofertilizer in sustainable agriculture? So इसका आंसर है increase crop growth through the natural microorganism. Biofertilizer contain करता है natural microorganism that helps to improve the soil fertility by fixing nitrogen, decomposing organic matter, and enhancing nutrient absorption. They are eco-friendly alternative to the chemical fertilizer. What is the benefit of precise farming in agriculture? सो प्रिसाइज फार्मिंग में क्या होता है? रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज और इंक्रीज लेबर कॉस्ट. नहीं. सो इसका आंसर होता है ए, रिड्यूस करता है पेस्टिसाइड के यूज को. सो प्रिसाइज फार्मिंग यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस सेंसर एंड डाटा एनालिटिक्स टू अप्लाई वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स मोर एफिशिएंटली. Thus this reduces the amount of chemical used and minimizes the environmental impact. Which of the following is an example of sustainable agriculture technology? So इसका आंसर डी, hydroponics. Hydroponics is the method growing plant without soil using mineral solutions in water. Thus it is an example of sustainable agriculture as it uses the less water and land compared to the traditional farming and allows year round
cultivation. So which is the primary purpose of genetic engineering in the crop? So इसका आंसर A, to increase the crop resistance to pest and disease. The genetic engineering involves the modifying the DNA of crop, thus crop to make them resistant to pest, disease and environmental stresses, ultimately leading to the higher crop yield and reduced dependency on the chemical pesticides. How does the biotechnology impact livestock farming? So by increasing the growth rate of animal. So biotechnology in livestock farming includes the genetic modification and other techniques that increases the growth rate, disease resistance and overall productivity of the animal, improving the food supply efficiency. What is the role of machine learning in precise agriculture? So machine learning का क्या रोल है precise agriculture में? तो इसका रोल है to analyze डाटा को analyze करता है from the sensor and improve करता है farming decision को. So the machine learning can process the vast amount of data collected from the sensor in the field, helping farmer optimizing the irrigation, fertilizer application and pest control, leading to the better crop yield and resource efficiency. So एक मिनट. I have to put the laptop on my laptop charger. So which of the following technologies is used to reduce the food spoilage during the storage? So इसका आंसर है refrigeration and cold storage. The refrigeration and the cold storage are crucial in preserving the perishable agriculture product by slowing down the growth of bacteria and enzyme, thus causing the spoilage and thereby extending the shelf life of the produce. So what is the purpose of sustainable irrigation system in agriculture? So इसका आंसर है C, to conserve water and improve the crop production. So which of the following is an example of climate smart agriculture? Climate smart agriculture में क्या होता है? Growing drought resistant crop. Climate smart agriculture include the practice of help farmer adapt to climate change, thus as a growing drought resistant crop using water efficient irrigation technique and densifying the crop variety to withstand changing weather pattern. How does artificial AI contribute to an agriculture? So it by automatic tasks like crop monitoring and pest control. Which technology is commonly used for crop monitoring using satellite imagery? So answer is remote sensing. Remote sensing uses the satellite imagery to monitor crop and access the health, growth and potential issues like disease and pest, thus helps farmer to make data driven decision on irrigation, fertilization and pest control. So what is the role of biodegradable plastics in agriculture? So इसका आंसर है B, to replace synthetic plastics produced like mulch film. So biodegradable plastics are used in agriculture to reduce the plastic waste. For example, mulch film. These plastic break down over time and adapt and drought and give a contribution to the long-term environmental pollution, and do not contribute to the long-term environmental pollution. Which of the following innovation helping to reduce the soil erosion in agriculture? So इसका आंसर है which of the following innovation helping to reduce the soil erosion? Soil erosion को reduce करना है तो monoculture farming, cover cropping and soil tillage, overgrazing by livestock and heavy use of chemical fertilizer. So I think B is the answer, cover cropping. Yes, it is correct. So cover cropping by cover cropping and conservation tillage. So cover cropping and conservation tillage method helps to protect the soil and erosion by maintaining the soil structure and preventing wind and water erosion and promoting the soil health. What is the main advantage of vertical farming in urban areas? So it uses the less land and water,
The vertical farming allows crops to be grown in a stacked layer using significant less land and water compared to traditional farming. This method is ideal for urban areas with limited space. Which of the following technologies has the potential to reduce post harvest loss in the agriculture? So B, smart storage and a climate controlled warehouse is the answer. So smart storage system and the climate controlled warehouse helps to maintain the optimal condition for storage, harvesting crops and preventing spoilage, and reduce the post harvesting losses by controlling temperature, humidity and air circulation. Which of the following is an example of integrated pest management IPM in agriculture? So इसका आंसर सी, by combining biological, physical and chemical method to control pest. The integrated pest management involves the combination of methods such as biological control, natural predators, physical barriers, and limited chemical pesticides to manage pests in the sustainable way. This approach reduces the reliance on the chemical and minimizing the environmental impact. So what is the type of biotechnology involves the use of microorganisms to improve the agriculture productivity? So इसका आंसर है B, microbial technology. Microbial technology क्या होता है? It involves using the beneficial microorganisms का use करते हैं like such as bacteria and fungi to improve the soil health को improve करने के लिए, degrade organic matter and assist plant को grow करने के लिए. This biotechnology can enhance करता है nutritional availability and reduce the need of chemical fertilizer. What is the main benefit using smart tractors in modern farming? मॉडर्न फार्मिंग के लिए स्मार्ट ट्रैक्टर का क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ है दे ऑटोमेट टास्क लाइक प्लांटिंग, फर्टिलाइजिंग एंड हार्वेस्टिंग में इसका यूज़ होता है स्मार्ट ट्रैक्टर का. तो स्मार्ट ट्रैक्टर में जो है वो GPS ऑलरेडी पहले से होता है एंड अदर सेंसर भी होता है दैट अलाउड to automate tasks such as planting, fertilizing and harvesting, leading to the increased efficiency, precise and reduce labor cost in farming. What is the key advantage of hydroponics in agriculture method? So it reduces the water compared to the traditional farming. What is the role of CRISPR technology in agriculture? तो इसका है to produce genetically modified crops with increased resistance to disease. Is a gene editing technology that allows the precise change in the DNA of the crop, enabling the creation of genetically modified plants that are more resistant to disease, pest and environmental stress, which can improve the crop yield. जो कि crop yield को improve करता है. How do the robotics improve farming efficiency? So by automatically repeating such as planting, harvesting and weeding. So the robotics in agriculture, autonomous tasks like automatic tasks like planting, harvesting and weeding reduce the labor required and increasing the precision. Automated machines can work 24/7, leading to increased productivity and efficiency in farming. What is the aeroponics refers to in agriculture practice? So it refers to the plant growth in the air with the mist of nutrients. सो एरोपोनिक्स क्या है? एक मेथड है जिसमें प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं वेयर द रूट इज सस्पेंडेड इन, जिसमें रूट जो है सस्पेंड करता है एयर में and the fine mist containing nutrients is sprayed onto them. This method uses less water and is often used in the vertical farming system. So which of the following technology जो है used to monitor track the livestock health? कौन सा इसमें यूज हो रहा है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है वो यूज हो रहा है. तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है से इसमें RFID से हम लोग मॉनिटर करते हैं और ट्रैक करते हैं इंडिविजुअल एनिमल को. दिस टैग्स जो है स्टोर करता है डाटा on the animal's health, breeding and movement, allowing the farmer to ensure the proper care and management. So next question, what is the purpose of genetic diversity in agriculture practice? So इसका आंसर है to increase the resistance to pest
डिजीज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, ये हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, इसमें क्रॉप को अलाउ करते हैं डेम टू अडॉप्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज करते हैं और रजिस्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड इम्प्रूव द ओवरऑल रेजिलेंस, इसका रेजिलेंस का कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है क्रॉप के लिए। सो विच टेक्नोलॉजी जो है यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिसीजन स्प्रेइंग इन एग्रीकल्चर। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिसाइज स्प्रेइंग इन एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर प्रिसाइसली जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे हम लोग थ्रू ड्रोन से हम लोग पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है केमिकल और मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होता है एंड इंक्रीज करता है इसमें एफिशिएंसी इन द क्रॉप मैनेजमेंट, और क्रॉप मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग में हम लोग क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, करते इसलिए हैं कि इससे क्या होता है कि टू रिड्यूस द पेस्ट कम लगता है और डिजीज साइकिल इन द सॉइल, रिड्यूस द पेस्ट एंड डिजीज साइकिल इन द सॉइल को हम लोग कम करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन से क्या करते हैं, चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड इन ईच सीजन, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन, reduce pest and disease cycle and maintain the soil fertility without relying heavy on the chemical input. So how does artificial intelligence assist करता है पेस्ट डिटेक्शन में, कौन सा पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, बाय आइडेंटिफाइंग द पेस्ट यूजिंग द इमेज रिकॉग्निशन, इमेज के रिकॉग्निशन से हम लोग बता दे सकते हैं कि कौन सा पेस्ट अप्लाई किया गया है। सो विथ AI जो है, AI के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पेस्ट इन द क्रॉप बाय एनालाइजिंग द इमेज कैप्चर्ड बाय द कैमरा और ड्रोन। द AI पावर्ड सिस्टम डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ द पेस्ट डैमेज, allowing for timely intervention and reduce the need for the pesticide. Which of the following is an example of sustainable packaging in agriculture? Sustainable packaging in agriculture में क्या है, सो इसका आंसर है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मेड फ्रॉम द प्लांट बेस्ड एनिमल्स। सस्टेनेबल पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैकेजिंग का हम लोग यूज करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना होता है। सो विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू इम्प्रूव द क्रॉप, क्या है ये, क्रॉप एडिटिंग इन एग्रीकल्चर। सो साइप्रस जीन एडिटिंग का हम लोग यूज करते हैं, जीन एडिटिंग फॉर प्रिसाइज मॉडिफिकेशन इन प्लांट जियोम, इम्प्रूविंग द डिजायरेबल traits such as resistance to disease, drought tolerance और better nutritional content. It is a breakthrough in crop breeding. Crop breeding में भी ये यूज होता है। So what is the role of smart weather station in agriculture? So smart weather station का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, तो ये टू प्रिडिक्ट द वेदर पैटर्न, ये वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट करने में यूज होता है। So which of the following technology helps monitor soil health in real time? सो कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करता है सॉइल के हेल्थ को जानने के लिए। तो इसका आंसर ए, सॉइल सेंसर का हेल्प करते हैं, सॉइल सेंसर का हेल्प लेते हैं हम लोग। ये क्या करता है, मेजर करता है सॉइल में मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर कितना है, न्यूट्रिएंट लेवल कितना है, एंड प्रोवाइड करता है रियल टाइम डाटा टू फार्मर, को प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प्स इन मेकिंग द डाटा ड्रिवन डिसीजन फॉर एग्रीकल्चर, fertilization and soil management, promoting the sustainable farmer practice. So what is the main benefit of using artificial intelligence in precise agriculture? तो प्रिसाइज एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इसमें टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ इनपुट लाइक वाटर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम लोग कितना यूज कर रहे हैं वो AI के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग का क्या बेनिफिट है, तो इसमें क्या होता है, इट रिड्यूसेस द सॉइल कॉम्पैक्शन एंड इरोजन। इसमें क्या है, सॉइल का कॉम्पैक्शन और इरोजन से हमें बचाता है। टिल फार्मिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग क्रॉप विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलिंग। इसमें जो है सॉइल के टिलिंग को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग प्लांटिंग करते हैं। दिस प्रैक्टिस helps to prevent soil erosion and reduce इसमें सॉइल के कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करते हैं एंड इम्प्रूव वाटर रिटेंशन, इसमें वाटर रिटेंशन को इंक्रीज होता है, लीडिंग टू हेल्थियर सॉइल ओवर टाइम। इसमें हेल्थियर सॉइल ओवर टाइम जो है बनता है।
So what is the main purpose of biological pest control in agriculture? Biological pest control का क्या पर्पस है? So इसका पर्पस है to use the natural predators and pesticides to control the pest population. So through natural predators और pesticide का यूज करके हम लोग पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. So the biological pest control uses the natural predators, parasites and pathogens to manage pest population in the more sustainable way. This reduces the reliance on the harmful chemical pesticide and promote the healthier ecosystem. How does the vertical farming contribute to the solving food security issues in urban area? तो इसका आंसर है B, by allowing for year-round food production in limited space. The vertical farming enables the food production in a stacking layer, making it suitable for urban areas with limited space. It allows crop to be grown indoor year-round with the controlled environment reducing the reliance on the traditional farming method and increasing the food security. So what is the main advantage? Main advantage क्या है? Using the crop sensor in agriculture. क्रॉप सेंसर का क्या एडवांटेज है एग्रीकल्चर में? तो इसका एडवांटेज है दे कैन डिटेक्ट न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी. सॉइल क्रॉप में क्या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है उसको ये डिटेक्ट करता है और उसको एडजस्ट भी करता है, थ्रू एडजस्ट इनपुट भी करता है. सो crop sensor are used to monitor the health of the crop by detecting the factors like nutritional deficiency, pest infestation and water stress. This allows farmer to adjust fertilizer, irrigation and pesticide use in real time, leading to the more efficient farming practice. What does the crop breeding using molecular markers aims to achieve in agriculture? तो इसका आंसर B, to improve the quality and the disease resistance of the crop. So molecular markers are used in the crop breeding to identify genes that are responsible for desired traits such as disease resistance, better quality and higher yield. That makes the breeding process more precise and efficient. So which of the following technology जो है वो help कर रहा है farmer को to manage irrigation system more effectively? तो इसमें से डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. सॉइल मॉइस्चर सेंसर का भी यूज कर रहे हैं, स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर का भी यूज कर रहे हैं, ड्रोन का भी यूज कर रहे हैं, तो आंसर डी हो जाएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का? तो इसका आंसर है डी में सी, टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और इन्वायरमेंट के पे इम्पैक्ट कम हो और रिसोर्स का कम यूज करें, टू उसको कंजर्व भी करें. So what is the solar powered irrigation system? How do solar powered irrigation system benefit farmer? solar powered irrigation system कैसे farmer को benefit कर रहा है? तो इसका आंसर है B, ये reduce करता है energy cost by using solar power. मतलब ये solar power के energy का use करके energy का cost को कम कर रहा है. So what is the role of disease resistance crop play in what role do disease resistance crop play in the agriculture? तो इसका आंसर है B, they reduce the need for pesticide and improve the crop yield. So disease resistance crop are designed to resist or tolerate specific plant disease, reducing the need for the chemical pesticide and improving the overall yield. This contributes the more sustainable farming practice and ensure the food security. Which of the following farmer techniques uses the biodegradable material to control the weed? So इसका आंसर है B, mulching में क्या करते हैं, ये कवर करते हैं सॉइल के क्रॉप के अराउंड के सॉइल को कवर करते हैं विद ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, सच एज स्ट्रॉ और ग्रास, टू सप्रेस द वीड ग्रोथ. वीड के ग्रोथ मतलब घासों के ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्रॉप के अराउंड जो है वो ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से हम लोग उसको कवर कर देते हैं. एंड कंजर्व, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर भी कंजर्व होता है और सॉइल का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है. दिस टेक्निक रिड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल herbicides. दिस टेक्निक रिड्यूस द नीड. इसमें क्या होता है, केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज भी कम होता है. हाउ डू
autonomous vehicle benefit large scale farming operations. तो इसका आंसर सी, by performing tasks like polling, planting and harvesting with minimum human intervention. The autonomous vehicles in farming, for example self driving tractors and harvesters, ये क्या है, परफॉर्म करता है रिपीटेटिव टास्क सच एज पॉलिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन, इंक्रीजिंग करता है इफिशिएंसी एंड रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट एंड इनेबल द मोर प्रिसाइज फार्मिंग प्रैक्टिस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर. तो इसका आंसर है सी, द फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर emphasizes the practice that is restore or enhance the soil health, biodiversity and ecosystem service. It focus on the using sustainable techniques like cover cropping, crop rotation and reduce the tillage to improve the long-term agriculture productivity and resilience. So our last question of this topic, the primary advantage of aquaponics in farming is, so इसका आंसर सी, the combination of fish farming and plant cultivation in a symbiotic environment. So aquaponics में क्या होता है कि हम लोग is a farming, ये farming method है that combines the aquaculture वैसे fish farming and with hydroponics, soilless plant cultivation with hydroponics. मतलब इसमें फिश और प्लांट जो है दोनों आएगा. और प्लांट कौन सा, जिसमें सॉइल का नीड जो है कम होता है, इसमें सॉइल ही नहीं होता, सॉरी. द फिश प्रोवाइड न्यूट्रेंट, फीड्स जो है न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को थ्रू देयर वेस्ट एंड द प्लांट फिल्टर एंड क्लीन द वाटर फॉर द फिश. दिस सिस्टम यूजेस less water than the traditional farming and can produce both fish and vegetable industry. So thank you for listening.